comfortable. Sit straight. आँख बंद करिए. Close your eyes. Take a deep breath. Exhale. एक बार और ब्रीथ लीजिए, लंबी ऊंडी सांस लीजिए और होल्ड करिए और छोड़िए. Breath is the key of relaxation. Relaxation is the key of suggestion, and suggestion is the key of hypnosis. Okay. Now, what I want, imagine, pretend you are standing in front of your house. Imagine करिए, visualize करिए, pretend करिए, feel करिए कि आप अपने घर के सामने खड़े हैं. घर कुछ भी हो सकता है. It may be a bungalow, it may be a duplex, it may be a flat, it may be a row house, farmhouse, whatsoever it is. जब आप अपने घर के सामने खड़े हो तो nod your head in yes. Okay. Now I want you to take one step ahead and go to the door of the gate. और डोर को खोलिए. ताला लगाया तो ताला खोलिए, लैच लगाया तो लैच खोलिए, हैंडल लगाया तो हैंडल खोलिए. जब आप दरवाजा खोलते हैं तो अपना सिर हिलाइए यस में. वेरी गुड, यू आर डूइंग गुड थिंग. नाउ वॉक इनसाइड. देयर इज नोबडी देयर, बट एज यू वॉक इनसाइड आई वांट टू नोटिस सराउंडिंग्स. आपका ही घर है तो आप चारों तरफ देखिए. इट इज फेमिलियर. सी द कलर ऑफ द वॉल. टच करके देख सकते हैं whether it is a whitewash or distemper or velvet painting. थोड़ा आगे जाइए, देखिए सोफा है, टीवी है, पर्दे लगे हैं. पर्दे को छू के देखिए, उसका टेक्सचर फील करिए, कलर देखिए. ये आपका घर है, आप इसमें कई बार आते जाते हैं, इसलिए यू आर फेमिलियर विद दिस थिंग. ठीक है. जब आप ये सब कर लें तो अपना सिर हिलाइए. ना आप थके हुए हैं, आज पूरा दिन आपने बहुत काम किया है. यू आर फीलिंग टायर्ड, सो गो टू ए प्लेस इन योर हाउस वेयर यू कैन रिलैक्स. वो सोफा सेट हो सकता है, बेड हो सकता है, रिक्लाइनर हो सकता है, इजी चेयर हो सकती है, चेयर हो सकती है. जब आप उस पर बैठ जाए तो अपना सिर हिलाइए. यस. ओके. अब मैं 1 मिनट साइलेंट रहूंगा. आप अपने ब्रीथ के ऊपर ध्यान रखिए. सांस लेते जाइए, रिलैक्स करिए. आपको लगेगा 10 मिनट में आपने रिलैक्स किया. यू विल फील कि यू आर टोटली रिलैक्स. लंबी सांस लीजिए और छोड़िए. As you exhale slowly through your mouth, just notice yourself sitting or lying there, going into deep sleep, becoming relaxed and comfortable, everything turning loose. As you notice yourself sitting there or lying there, going into a deep sleep, time is drifting by slowly. It is almost as if time is speeding up now, as 1 minute goes by. 2 minutes, 5 minutes has just drifted 10 minutes. You have been sitting there or lying there relaxed. You notice now sitting there lying, it is time to wake up because you are starting to feel a little bit hungry. So you look inside the kitchen for something to eat. Something that has your name on it. Go into the refrigerator or go into the cupboard or you prepare that meal very quickly. Go ahead. Prepare it. Once you prepare, nod your head yes. Now go ahead and just take a bit of it because you are hungry. Go ahead and take a bit and really let the roll across your tongue in your mouth. Taste that. Oh boy, that tastes very good. When you do it, nod your head yes. As you begin to taste that food and have that sensation rolling down across your tongue
and down your throat. Nod your head once again, if you would please. Very good. That's awesome. That's good. Now go ahead and open your eyes. Come all the way for a moment, please. How many of you saw the gate of your house? How many imagined you are in front of your house? Somebody has a good visualization power, so they saw it. Somebody has the imagination power, so they imagined. Most of them can imagine, very few can visualize. Okay. और क्या खाने में किसने क्या बनाया? आपने क्या बनाया था? I was frustrated. Fridge खाली. आपने मैडम क्या खाया? Bread. हाँ? Garlic bread. Garlic bread. आपने सर? गुलाब जामुन. Very good. आपने मैडम? सूप बनाया. Okay, very good. So enjoyed? Taste आया मुंह में? Relax हुए थोड़ा? Very good. Okay. चलिए आगे चलिए. This is starting of the astral travel. अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करेंगे तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन ट्रैवल इन टाइम और आप अपने घर में क्या हो रहा है एक्चुअली देख सकते हैं. दूसरी सिटी में अगर गए तो अपने घर में देख सकते हैं, अपने घर से दूसरी सिटी में देख सकते हैं. यू कैन फील व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली देयर बिकॉज माइंड हैज गॉट ए ट्रिमेंडस, इट इज अ रडार. इसका पूरा नेटवर्क होता है, तो इंस्टीट्यूशन होता है, हंचेस होते हैं, इसके थ्रू आपको पूर्वाग्रह हो जाता है या आवाज हो जाता है. दिस इज ऑल फॉर द प्रैक्टिस. प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे रियलाइज. सो जस्ट आई गिव इट अ फीलिंग कि ये आप कर सकते हैं आंख बंद करके, तो आपको दिखा होगा अपना घर, क्योंकि इट इज अ फैमिलियर विथ यू. डू सो मेनी थिंग्स इन ऑफिस एंड अदर थिंग्स लाइक दिस. चलो क्विकली टाइम कम है, सर ने बोला है तो 15 मिनट है. एक एक्सरसाइज और कर लें. एक्सरसाइज करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा लेक्चर देने से ज़्यादा. तो आप में से 4-5 लोग स्टेज पे आ जाइए. हाफ बॉयज एंड हाफ गर्ल्स. पहले गर्ल्स. सब गर्ल है ना? आइए प्लीज. India is totally women empowered. 2 girls immediately आगे और सोच रहे कौन आगे आएगा. वो सोच रहे इंट्रोड्यूस कौन करेगा. आइए कम फॉरवर्ड. चलो टाइम कम है, जल्दी आइए. थोड़ा जल्दी बॉयज जेंट्स बॉयज किड्स आइए. एक्सपीरियंस है हिप्नोसिस. आपको हिप्नोसिस का एक्सपीरियंस होगा एक्चुअली कि हिप्नोसिस क्या होता है एक्चुअली. आप सर यू आर ऑलरेडी एंटायर सोची है. एक चेयर और खाली जगह बेटा और आ जाइए एकदम. जाना ही नहीं जाना. खड़ो में पास में आ जाइए. आप खड़े रहिए. आप खड़े रहिए. आप खड़े रहिए. Okay, give them a lot of applause.
This is a exercise of imagination. Everybody can imagine. अभी आपने imagine किया ही है कि Okay, जब तक mic this is exercise of imagination. So आपको imagination visualize पता ही है कि क्या कर सकते हैं. I call it the pretend. Okay, pretend मतलब धारने का. तो धारने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हूँ या प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हूँ. उसमें तो कुछ ज़्यादा नहीं हमारा सोच सकते हैं हम आराम से. So this is a exercise. Okay. So and आपको कुछ करना नहीं है. जस्ट सोचना है कि आई एम इन हिप्नोसिस एंड यू विल बी इन हिप्नोसिस. ठीक है. और मैं जो बोलता हूँ यू टू जस्ट फॉलो इट. Let the things happen, not happen. Consciously don't try to oppose it. ठीक है? And you will enjoy it. Okay. पाँव जमीन पर रखिए. Feet flat. Left. ठीक है. लंबी सांस लीजिए. एक्सहल करिए, आँख बंद करिए. प्रिटेंड करिए कि आप कई साल पहले चले गए बचपन में. यंग थे, स्कूल के अंदर थे. आपने कोई फैंसी ड्रेस में भाग लिया होगा. कोई राधा बनी होगी, कोई कृष्ण बना होगा, कोई औरंगजेब बना होगा, कोई शिवाजी बना होगा. ध्यान करिए. प्रिटेंड, इमेजिन और विजुअलाइज. क्या आप लोगों ने तो अपना सिर हिलाइए फिर से यस में. ठीक है. आँख खोल दीजिए. आँख खोल दीजिए. Now you know how to pretend. ठीक है. Okay. Now this is a crystal. मैं आपके सामने क्रिस्टल लेके जाऊंगा. ठीक है. This is the crystal is used for the concentration. आपको अपनी नजर क्रिस्टल के बीचों बीच रखनी है. यहाँ क्रिस्टल जाता है अपनी नजर उसके साथ साथ लेके जानी है. ठीक है. और जब मैं आंख बंद करने के लिए बोलूंगा तब आपको आंख बंद करनी है. Now close your eyes. Take a deep breath and exhale. Now you have only one aim. One aim is to pretend. To use your power of mind. Pretend is the advancement of the imagination. And when you imagine anything, that becomes reality. Now again pretend any happy moment in your life. आप पिकनिक पे गए, किसी की शादी पे गए, फ्रेंड के घर गए, नाइट आउट गए, डांस पार्टी में गए वगैरह वगैरह, जो भी आपको pretend. Feel it now. What you saw that time, feel it now. See now. What you hear that time, heard now. Pretend. The God has given us very powerful tools, imagination and visualization. Use that. Pretend it now. Feel it now. Now you know how to pretend. Okay. Now pretend your eyes are locked shut. A heavy light is been placed on your eyes and it is locked shut. You cannot open your eyes. You cannot open your eyes. Try to open your eyes, but it is locked shut. You pretend to become imagination and imagination become reality. Make it reality. Your eyes is locked shut. Okay. Relax. Now I'll tell you to go deep into the grumble of your subconscious mind. Now I'll teach you how the thoughts can convert into the physical moment in our body. Just your roll your eyes inside towards the head. See, there is a hole on your head. आपके सिर के ऊपर एक होल है.
there is a white light has come, energy. You can change the color as per your convenience. आप उसको कोई भी कलर दे सकते हैं. अब देखिए सर, आप ऊपर रोल करके देखिए, सर के बीचों बीच एक खिड़की खुली है जिसमें से आपको एनर्जी दिखाई देगी. वो एनर्जी कोई भी कलर आप दे सकते हैं उसको. वो एनर्जी सिर से आपके बॉडी के अंदर ट्रेवल कर रही है, धीरे 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 बॉडी में ऊपर से नीचे जा रही है और आपकी बॉडी एनर्जाइज हो रही है. नीचे से ऊपर आ रही है, ऊपर से नीचे जा रही है और 8 की शक्ल में ऊपर से नीचे जा रही है और आपकी बॉडी एनर्जाइज हो रही है. मल्टीप्लाई इट, मेक इट मोर स्ट्रॉन्ग, मोर, फील मोर एनर्जाइज. Now it is traveling to whole your body, your full body is energized now. Now this energy is coming to your hand, and through hand it is coming to your finger. Now your finger is energized. There is a tingling effect on the fingers. You can feel it. You can feel it. Okay. Now in a moment, not now, in a moment I will tell you to open your eyes. When you open your eyes, that tingling effect will in hand, fully energized. Got the idea? So nod your head, yes. Okay. 1, 2, 3, open your eyes, having the full energy in your hands. Now make this thing. See on the fingers. Pretend it has been blue shot. I'll count 1, 2, 3. उधर देखिए फिंगर के ऊपर. Pretend it is blue shot. I'll count 1, 2, 3. This will become more and more tighter and tighter. More shut, more shut. 1. It has become more tight. Glued, glued, glued. It has become tighter and tighter and tighter and tighter. 3. It is tight. Now you cannot separate that. Harder you try to separate, more it is going to stuck. More you try to separate, more going to stuck. It is hard to separate. It is tight. It is tight. Try hard, but you cannot. Try hard, you cannot. Till the time I will not tell, it will not separate. Are you trying, sir? Are you trying, ma'am? Okay. Now, when I say you will separate it, but something strange will happen. More strange will happen. Okay. Now, this hand is stuck here. The powerful glue is being placed on your head, between head and the hairs, and it will be stuck. The more you try to lift, more it is going to stuck. More you try to stuck, more it is going to stuck. Are you trying? Try to lift, try to lift. It is stuck. It is stuck. Now I will try to do this thing. It will be released. The leg will be stuck to the ground. Leg is stuck now. You cannot move. The harder you try to move, the more it is going to stuck. It is stuck on the ground. It is stuck on the ground. Are you trying? Yeah. Now you can move. But your mouth is shut now. The lips are shut. Lips are shut. Try to open, but it will not open. You cannot open. Harder you try to open, more it is going to shut. Are you trying? Are you trying? No. Now on the snap, you can open it. Open the mouth. More open. Now you cannot close it. Now you cannot close it. Harder you try to close, more it is going to open more and more. More and more. More and more. Okay. Relax. Thank you. So, see different environment, you may be trying to resist, you may take some more time. It's like your conscious mind is operating as a तो conscious mind. इसलिए आगे अभी लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ कि
कुछ लोगों को ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ लोगों को कम टाइम लगता है. देयर आर डिफरेंट ऑफ पर्सनालिटीज अराउंड दिस. बाकी सब लोग बैठिए. आप मैडम यहीं रुकिए. नहीं उठ सकता है, नहीं उठ सकते. Because I am interested in giving you more suggestions rather than the lecture. फिर थोड़ा टाइम में लेक्चर दे दूंगा क्योंकि फिर बाद में अगर if you permit half an hour more तो फिर we can go as per schedule. और नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बाकी लोगों के लिए नहीं. ओके. तो एक 5-10 मिनट. तो मैं रफली टोटल एक सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बता देता हूँ जल्दी फटाफट. आप इधर आइए मैडम जी. सबकॉन्शियस माइंड NLP and NSC are connected. NLP and NSC how connected this? NLP और NLC काफी आगे जाके है इसको. That is we used to. जब तक आपको माइंड पर नहीं समझ में आएगा आप NLP और NLC नहीं करेंगे. NLP is न्यूरो लिंग्विस्टिक, माइंड और लिंग्विस्टिक है. NSC is न्यूरो एसोसिएट. उसमें हम लोग वर्ड को एसोसिएट करते हैं उसमें हिप्नोटिज्म में जाने के बाद. तो क्विकली ये मेमोरी हाउस है हमारा. हैबिट्स इसके अंदर होती है हमारे यहाँ जो फॉर्म होती है. आगे चलते. इमेजिनेशन सबकॉन्शियस में है. इमोशंस हमारे अंदर है. प्रोटेक्शन, ये जो माइंड है ये आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए पर आगे पर ये दे नहीं सकता है क्योंकि इट बियर्स लाइक ए 4 ईयर चाइल्ड. इसको आता नहीं है हमको कैसे प्रोटेक्शन देना है. ठीक है. तो सपोज आगे चलिए जैसे कार एक्सीडेंट हो गया किसी का तो ये बोलेगा कि इसको गाड़ी मत दो तो एक्सीडेंट ही नहीं करेगा लाइक दैट. या गैम्बलिंग करता है तो गैम्बलर को बोलेगा कि इसकी नौकरी छुड़वा दो, ये पैसे कमाएगा नहीं तो पता ही नहीं चलेगा. उसकी आदत छुड़ाने का मतलब ये तरीका प्रोग्राम वो खुद नहीं कर पाएगा. ये हमारा नेगेटिव पार्ट है, लेजियस्ट पार्ट है. हमारा नेगेटिव जितने भी होती है फीलिंग हैबिट सब जल्दी हमारे दिमाग में जाती है और पॉजिटिव में ये तकलीफ होती है. ठीक है. रिलेशन इसका होता है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में कि एक पनडुब्बी होती है सब मेरे. उसका जो कमांडर होता है वही बोलता है, बाकी सब लोग फॉलो करते हैं. तो इसमें सबकॉन्शियस माइंड गाइड करता है और कॉन्शियस माइंड उसको फॉलो करता है. ठीक है. अभी जैसे कि प्रोग्राम में अगर एक फैट पर्सन जाके मिरर के सामने खड़ा होगा और बोलेगा कि आई एम फैट तो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज जाएगा वहाँ पे प्रोग्राम में हाँ यू आर फैट तो बोलेगा यस इट इज ट्रू. पर अगर बोलेगा आई एम थिन तो प्रोग्राम रिजेक्ट हो जाएगा कि नहीं यू आर नॉट थिन. ओके. हाउ इफेक्ट्स आर फॉर्म. तो ये मैंने आपको बता दिया कि एक तो सिगरेट कैसे पीते हैं, सिक्योरिटी के लिए पीते हैं और पहले लोग शौक के लिए चालू करते हैं, धीरे धीरे वो आदत बनती है फिर लत लग जाती है. दैट बिकम्स एडिक्शन. नेक्स्ट. कोई भी हैबिट फॉर्म करने के लिए 21 डेज चाहिए, छोटे के लिए भी 21 डेज चाहिए. हैबिट कैसे फॉर्म होती है. टाइम कम है फिर भी मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ कि 2 अफीमची होते हैं. ओपियम खा के नदी के किनारे टहल रहे होते हैं तो उनको कंबल तैरता हुआ दिखाई देता है. एक अफीमची बोलता है मैं कंबल जाके पकड़ के लेके आता हूँ. वो कूद जाता है. वो जाके कंबल के पास जाता है तो काफी देर होती है बाहर नहीं आता तो बाहर से दूसरा अफीमची उसको बोलता है कि भाई कंबल नहीं मिल रहा है तो उसको छोड़ दे तो वापस आ जा. बोलता है मैंने कंबल को तो छोड़ दिया, कंबल मेरे को नहीं छोड़ रहा है. तो हैबिट इसी तरह होती है. हम लोग पहले हैबिट के पास जाते हैं कंबल के पास, फिर बाद में कंबल उनको पकड़ लेता है, फिर हम कितनी भी कोशिश करते हैं छोड़ने के लिए फिर वो हमको छोड़ता नहीं है. ठीक है. तो हमारी आदत हमारी क्यों नहीं छूटती है. दिस इज बिकॉज ऑफ द पेन एंड प्लेजर की वजह से. जितना भी अननोन है हमारे पास दैट इज अ पेन क्योंकि हमने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है और जितना भी नोन है वो हमारे पास प्लेजर है, उसको हमने एक्सपीरियंस किया है. तो हम लोग का काम यह है कि हम लोग सबकॉन्शियस में जाके और प्लस को माइनस या माइनस को प्लस करते हैं. नेक्स्ट. अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो नेगेटिव से बहुत ज्यादा भरा रहता है. सपोज मैडम को मैं बोल दूं यू आर लुकिंग प्रिटी तो तुरंत या तो चप्पल उठा के मेरे को मारेंगे, क्या बोलेगी व्हाट इज द कैच. शी विल नॉट टेक इट इन अ गुड सेंस कि यस ही इज अप्रिशिएटिंग मी.
नेक्स्ट। फिर हम लोग दिन भर नेगेटिव सेंटेंस बोलते रहते हैं, मेरा हर काम बिगड़ जाता है, मेरे से सिगरेट की आदत नहीं छूटती है, मैं ये करना चाहता हूँ मेरे से नहीं होता है, आया हूँ बैड लक है, मेरा काम खराब है, ग्रह खराब है, वगैरह वगैरह। दिन भर ऑटो सजेशन हम लोग सेल्फ देते जाते हैं, वो सब हमारे लिए हमारे अगेंस्ट में जाते हैं। अगर हम पॉजिटिव बोलेंगे, जैसे मैं आज गुस्सा नहीं होऊंगा, आई विल नॉट बिकम एंग्री। सबकॉन्शियस की आदत है कि यू ड्रॉप द नॉट एंड एंग्री भगवान, आई विल बिकम एंग्री, उस दिन आप ज्यादा एंग्री होंगे। इंस्टेंट यू शुड यूज कि आई विल रिमेन काम टुडे, तो आप शांत रहेंगे। तो दिस इज द लैंग्वेज यू शुड यूज। जितने भी नेगेटिव है वो खत्म कर देने चाहिए, नहीं तो ऑटो सजेशन देने से वो भी हमारा को ब्लॉक करते हैं। नेक्स्ट। तो हम लोग अगर चेंज लाना है हमारी जिंदगी में कोई भी चीज के लिए, तो कॉन्शियसली पहले तो आपको विलिंग होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बुला रहा हूँ यहाँ पे आओ, तो आपको पहले आना पड़ेगा। अगर आप कॉन्शियसली तैयार होंगे, देन द फर्स्ट स्टेप यू विल डू इट। फिर मोटिवेट, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा कि आई कैन डू इट। और तीसरा है कि बिलीव यू कैन अचीव द गोल। वी हैव टू प्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट, what is programming? Process to change those negative beliefs, habit, addiction, fear, positive or positive, negative. Next, we have to take the suggestion into subconscious mind. Next, अब आपने डिसाइड किया कि मेरे को सिगरेट छोड़नी है, ठीक है। नेक्स्ट, पर आप सिगरेट नहीं छोड़ पाते, क्यों? क्योंकि दोनों माइंड के बीच में क्रिटिकल माइंड है। इट इज लाइक ए डोरमेट। वो बोलेगा, कॉन्शियस माइंड बोलेगा कि ये आदमी सिगरेट छोड़ना चाहता है, तो वो कॉन्शियस माइंड में जाएगा। अच्छा, सब क्रिटिकल फैक्टर है वो, ही इज वर्किंग फॉर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड उसको हर फ्राइडे को पेमेंट देता है वीकेंड के लिए, वो जाके एंजॉय करके आता है, तो उसी की बात सुनता है वो। सबकॉन्शियस में जाएगा, सबकॉन्शियस बोलेगा अरे यार ये तो 20 साल से सिगरेट पी रहा है और इसको तो रिमूव करने के लिए मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सबकॉन्शियस हमारा नेगेटिव और लेजीएस्ट माइंड है, बोलेगा नहीं नहीं छोड़, बाद में देखेंगे। तो क्रिटिकल फैक्टर इसको रिजेक्ट कर देगा आइडिया को। नेक्स्ट, अब इसको क्या करना चाहिए कि हम सजेशन अंदर जाए कॉन्शियस माइंड में और पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव करें। उसके लिए क्रिटिकल फैक्टर जो है, इट इज लाइक ए फिल्टर। और फिल्टर जैसे होता है, ज्यादा आप चाय भरते जाओ, कप में भरते जाओ, अगर ओवरलोड हो गया चाय बाहर निकल के गिर जाएगी। ऐसे ही इसको अगर ओवरलोड करेंगे हम लोग, तो फिल्टर वो कोलैप्स हो जाता है, तो वो चला जाता है साइड में। जैसे डोरमैन है, और डोरमैन को क्या कर सकते हैं आप? उसको बेहोश कर दो, उसको एंगेज कर दो, उसको ब्राइव कर दो, उसको हटाना है आपको वहां से। किसी भी तरह से वो आपको जगह खाली करके दे देगा, तो आप डायरेक्ट सबकॉन्शियस से बात कर दोगे। तो हाउ क्रिटिकल फिल्टर ऑफ माइंड गेट्स ओवरलोडेड। ओवरलोड करने के लिए हम ऐसे यूनिट है, टाइम हो गया। बच्चे कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू रखिए। Sorry sir, I am not allowed. Actually, I will rest the meeting next Thursday at any capability by 8 o'clock. I should respect the staff member. Honestly, they will not say no. People at home will be think. But I will do the solution. I will do the solution in next 5 minutes. Next we have to call you once again. Yeah. साथ हो गया सर, I have to face this action. नो प्रॉब्लम, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है कि हाँ, yes. 5 minutes more. इसीलिए 5 minutes है आपसे. So we can go through the slides. Sorry. आप सिर्फ स्लाइड अगर बता सकते हैं। Gentle promise from my side. Looking to your interest, I will recommend his name for the management development program, not for hour, for a half day, or full day, or 2 days workshop. Okay. Will you agree, everybody? Okay. I will strongly recommend this thing. Don't worry. I understood this is something is very important, but at the same time, maximum you can give the highlights of the subject, not the complete. So I will request the management, the chairperson of the MDP, that I will consider it. I recommend his name for the MDP program. क्लास एक्सप्लेन करना है 5 मिनट की, if you permit। हो जाएगा? 5 मिनट। स्लाइड्स ठीक है। स्लाइड्स साइड नहीं, साइड आपको साइड में टाइम लगेगा। एक्सरसाइज आपको बता देता हूँ आगे।
इंडक्शन जो हम लोग करते हैं, एक जो सेटअप होता है हमारा पूरा, वो कैसे होता है कि आप कॉल करेंगे मुझे, आपको कोई प्रॉब्लम है तो कि आई वांट टू हैव मीटिंग, जैसे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेते हैं, हम लोग उसको बुलाते हैं, रिपोर्ट करते हैं उनके साथ, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, उनको इजीली करते हैं। उसके बाद हम उनका टेस्ट करते हैं, पर्सनैलिटी कैसी है। 2 टाइप की पर्सनैलिटी होती है, वो बाद में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आगे बताने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमको इंडक्शन करते हैं। इंडक्शन इज द प्रोसेस टू टेक ए पर्सन इनटू ट्रांस, ठीक है। उसके बाद हम उसको